Today we shall move ahead in our programming. Up till now we have studied only some statements regarding to C programming, and the statements which we have studied are which statements? Printf statement, okay, and scanf statement. And another which statement we have studied? We have studied the assignment statements and various operators and the operations which we can perform. Even we have studied the priority and associativity of various operators if they exist in an equation. Now let us move ahead to new topic, and the topic is control statements. So up till now what we have studied? We have just written statements in some particular order. That means statement 1, then statement 2, then statement 3 and so on up till statement n. That means what? एक प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं एंड एक्सिक्यूशन कैसे हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट टिल द लास्ट स्टेटमेंट. ये चीज हमेशा पॉसिबल नहीं है. It is not always possible that a program executes in a sequential order. This type of execution is called which execution? Sequential execution. Fine. And it is not always possible कि आपका हर प्रोग्राम इसी फैशन में एग्जीक्यूट हो. नॉर्मली भी हमारे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि अगर वी आर गोइंग एट सम प्लेस, ठीक है, एंड वी वॉक ऑन अ पर्टिकुलर रोड, then there might be possibility that there is a crossroad ahead. crossroad होगा, ठीक है, और उस crossroad पे आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है. पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसीजन लेना है कि हमें कौन से वे में जाना है. either I want to go this side or I want to go this side or I want to go straight. ठीक है, नॉर्मल केस के अंदर. तो हमारे प्रोग्रामिंग में भी ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में आते हैं एंड आफ्टर दैट देयर इज सम पर्टिकुलर कंडीशन होती है एंड उस कंडीशन को फॉलो करके हम पाथ को चेंज कर सकते हैं. या तो ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशन या तो कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन सम कंडीशन, और यू कैन से दिस थिंग इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. फाइन. कंडीशन को आपको चेक करना है और कंडीशन को फॉलो करना है. कंडीशन के ऊपर ही आपका जो कंट्रोल है पूरा चेंज हो जाएगा and this situation is called decision making. Now for that you have to understand condition. Condition is nothing but it is what? It is a relational expression. Relational expression. Condition क्या है? It is a relational expression. And what is a relational expression? It is combination of some variable or some value or some expression. Fine. With what? With relational operator. For example, x greater or equal to y, greater or equal to y, x plus y greater than 10. ओके, तो ये चीज हमारी क्या है? दिस इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड इट इज नथिंग बट इट इज अ कंडीशन, और इट कैन बी अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, or it can be a logical expression. Now what is logical expression? Logical expression is what? It is combination of more than one relational expression. That means what? X is greater than y एक condition है, या तो एक relational expression है and दूसरा relational expression है x greater than z, और ये दोनों को हमको एक साथ यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे या तो और यूज करेंगे. एंड हम कब यूज करेंगे? जब दोनों कंडीशन कंपलसरी हमें ट्रू चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे. अगर दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है और हमारा काम चल जाता है तो हम क्या यूज करेंगे? और यूज करेंगे. ठीक है, तो कंडीशन कैन बी आइदर रिलेशनल एक्सप्रेशन, ओके, और अ लॉजिकल एक्सप्रेशन. हमें यही याद रखना है. डिसीजन मेकिंग में बेसिकली होता क्या है? एक कंडीशन होती है एंड उस कंडीशन के ऊपर से हमें क्या लेना है? डिसीजन लेना है. एंड कंडीशन इज व्हाट? इट कैन बी आइदर अ रिलेशनल एक्सप्रेशन और अ लॉजिकल एक्सप्रेशन. So C has various decision making statements. अब आपको कंडीशन किसके साथ यूज करनी है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के साथ यूज करनी है. ठीक है, एंड दीज स्टेटमेंट्स कंट्रोल द एक्सिक्यूशन.
यानी वो एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेट जाते जाते कोई डिसीजन लिया एंड डिसीजन के हिसाब से आपका कंट्रोल चेंज हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। द डिसीजन स्टेटमेंट्स आर, विच आर द डिसीजन स्टेटमेंट्स इन सी? इफ स्टेटमेंट, switch statement, jumping statement and looping statement. So we will see all these statements one by one. Once again, which are the decision making statements in C? If statement, switch statement, jumping statement and looping statement. If statement. In a C program, the statements are executed sequentially, okay, and this happens when no condition is used in your statements. But if you put some conditions for a block of statement, लेकिन अगर आप एक कंडीशन रख देते हो स्टेटमेंट्स के लिए, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन माइट चेंज बेस्ड ऑन व्हाट? रिजल्ट. Which result? Evaluated by the condition. Okay, this process is referred to as decision making. Always remember कि आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में हो सकता है कि एक कंडीशन आए और इस कंडीशन को जब आप सॉल्व करो तो आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज हो सकता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिसीजन मेकिंग कहा जाता है. If statement is responsible for modifying the flow of execution of your program. If statement is always used with a condition. The condition can be simple or compound. As I told you, simple condition is formed using which operation or expression? Relational expression. Compound condition is formed using which expression? Logical expression. The condition is evaluated first. ओके, पहले सबसे पहली चीज क्या होती है? कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हैं. फाइन. एंड देन आफ्टर द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. नाउ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट्स आर देयर. आपका एक इफ स्टेटमेंट है, लेकिन इफ स्टेटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं. कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? सिंपल इफ स्टेटमेंट, और यू कैन से वन वे इफ एल्स, टू वे इफ एल्स, मल्टीपल इफ एंड नेस्टेड इफ. इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? नेस्टेड इफ होता है. लेट अस सी वन बाय वन फॉर्म्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट. सिंपल इफ स्टेटमेंट. सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? इफ विद इन ब्रैकेट कंडीशन. अब इफ के साथ जो स्टेटमेंट्स को हमको कनेक्ट करना है वो स्टेटमेंट्स हम किसके अंदर लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे. So within the curly braces, I have to write the statements which are associated with the given condition. Here the block means sequence of statements. If the block consists of single statement, then the braces might be omitted. इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी ये कंडीशन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हो तो ये कर्ली ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं है. So the flow chart can be, there is a condition, find there is a condition. If this condition is true, then this block is executed. If this condition is false, then nothing will happen and here it will come out of the block. ये block के अंदर कब जाएगा? सिर्फ और सिर्फ तब जाएगा जब ये condition true होगी, तभी जाएगा. Let us understand the program which shows the use of simple if statement. We have to find or we have to check whether the first number is greater than second number. That means what? मुझे सिर्फ find करना है कि पहला नंबर बड़ा है कि नहीं. So I am declaring two variables a and b. Then I am reading the value of a. Then I am also reading the value of b. Without reading the value of b, I won't be able to compare the value of a. And what I have to compare? I have to compare whether a is greater than b, and for that I have to use the if statement. If a greater than b, then I have to display the message a is greater than b. Only I have to check कि a बड़ा है. अगर a बड़ा नहीं है तो हमें क्या करना है वो बताया नहीं गया है, एंड सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, इसीलिए I haven't used the curly braces over here. And after completion of the if statement, what have I written? printf out of if block. तो अगर हमने वैल्यू ऐसी डाली है कि a 10 है and b 20 है,
तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? बिकॉज A is less than B. But if I have entered 50 and 10, then what it will be displayed? 50 is greater. Okay, and it will also display out of the if block. Let us understand another example as well. Here I want to check whether the entered number is positive. Okay, and here I am using the concept of global declaration, यानी मेन फंक्शन के बाहर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, लेकिन वेरिएबल को यूज कहां पर किया है? मेन फंक्शन के अंदर यूज किया है। I have read the value of a, and for checking whether the number is positive or not, तो हमें क्या चेक करना है कि a must be greater than 0. So if a greater than 0, then I can say that a is positive. If I have entered 10, that means it is obvious that a is a positive number, so it will display a is positive, or you can say 10 is positive out of the if block. If I have entered -10, then it won't display this printf statement, it will just display out of the if block. I hope that it is clear to everyone now.